Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to this video. So in this video, I'm going to talk about the eligibility criteria for NABARD grade A examination. So I have been getting a lot of query from lot of aspirant regarding the eligibility of this exam because now they are thinking to prepare for this exam, right? Few of them are in colleges, few of them were preparing for some other exam and now they are thinking that they should start preparing for NABARD grade A. So today, to cater all the queries regarding eligibility of this exam, I will tell you what is the educational qualification required, what is the age category, then what is relaxation given in the age or education qualification, and also I have collected few FAQs that will be helpful for you, right? So this is the agenda of this video, but before starting, I wanted to show you guys the EduTab vlog which you can visit, and this vlog will provide you all the information regarding NABARD and NABARD examination. Okay, so you just have to go to the categories, select NABARD grade A, okay, and you will get all the information here. And if you wanted to know about exam, all the exam information is provided. Wanted to know about the job profile of NABARD grade A officer, that is also given, strategy, courses, and also the success stories of NABARD grade A toppers. So here, if you will click on the success stories, you will find all these success stories. You can watch these success stories and motivate yourself. So I request you once, just go and visit this vlog, okay? So let's start the video. First, I'll talk about the educational qualification. So if I talk about educational qualification, for the journalist post, in NABARD, we have journalist and specialist post. In a specialist post, you require bachelor degree in that specialized subject. But for journalist post, the educational qualification that is required, that you have to do bachelor degree. You must have done bachelor degree in any subject from any recognized university with minimum of 60% aggregate marks. Okay, so this is the eligibility, and if you are from SC, ST, PWBD, then 55% marks minimum is there for you, right? But if you have done PG also, from PG degree, you just need 55% minimum aggregate for journalist post, sorry, for unreserved category, and for SC, ST, PWBD, it is 50% aggregate. And if you have done PhD, then there is no such criteria. You can just simply fill the form. Clear? Now, there is one more thing, that what if you do not have any kind of instrument to convert your CGPA, OGPA into percentage, because sometimes we get marks in CGPA and OGPA, right? So for that, NABARD has also given this table. If you have CGPA or OGPA equivalent to 6.75, so that will be equivalent to 60% aggregate marks. Okay, so you can tally from this table and accordingly you can decide whether your CGPA is falling in the category or not, right? So this is again, this table is from the NABARD notification itself. You can visit the notification or you can take the screenshot here itself. Now, moving ahead with the further criteria. So if someone is eligible for both journalist and specialist post, so can he or she apply for both the posts? So answer here will be no, because you can only apply for one post. Okay, NABARD clearly mentioned in the notification that you have to pre-decide whether you wanted to fill the form for journalist or specialist post, and accordingly you have to prepare for this exam. And also students, see, only one discipline, you have to pre-decide which discipline you wanted to give exam, whether for the journalist or specialist. ठीक है, एक ही में आप दे सकते हो. नेक्स्ट, जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए देर इज नो रिलैक्सेशन. PWBD ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी, हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट UR कैटेगरी. सो देर इज नो relaxation in educational qualification. However, there is a relaxation in age criteria. Next, कि हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए. सो देर इज अ डेट मेंशन ऑलवेज इन द नोटिफिकेशन. अब 2024 का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें भी एक डेट मेंशन होगी. अगर उस डेट से पहले आपकी डिग्री या फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके हाथ में है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम. ठीक है, सो जस्ट for those aspirant who are in the colleges right now, who are in the final year right now, so for those they have to see the notification and see the date and accordingly decide कि आपकी डिग्री उससे पहले आपके पास है या नहीं, and accordingly you can decide whether you are eligible or not. ठीक है. Now students, there is one thing that has been highlighted by NABARD, that bachelor degree in particular discipline means that the candidate must have studied that discipline as a main subject in respective degree courses. ठीक है, अगर आप बैचलर डिग्री फॉरेस्ट्री बोल रहे हो तो आपने वो एज अ मेन
सब्जेक्ट पढ़ा हो अपने कोर्सेज में, जो आपका डिग्री कोर्स है उसमें, ठीक है, इस तभी वो बैचलर डिग्री इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द एज क्राइटेरिया। सो एज कितनी होनी चाहिए फॉर फिलिंग दिस फॉर्म? सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर फ्रॉम 21, इफ यू आर अबव 21 एंड बिलो 30, और 21 से 30 की एज ग्रुप में आप आते हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर फिलिंग दिस फॉर्म। ठीक है, नाउ अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि वेदर आई एम मीटिंग दिस एज रिक्वायरमेंट और नॉट, बिकॉज सम माइट बी स्केप्टिकल कि मैं 20 या 21 में आता हूँ, या फिर कुछ होंगे कि या मेरी 30-31 तो नहीं हो रही है। सो फॉर दैट ऑल्सो नाबार्ड ऑलवेज गिव्स यू अ डेट। ठीक है, नाबार्ड की नोटिफिकेशन में एक डेट होगी, उस डेट से आपने टैली करना है कि आपकी एज क्राइटेरिया एज क्राइटेरिया की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है या नहीं। सी अगेन, इफ यू कैन नॉट डिसाइड फ्रॉम दिस डेट ऑल्सो, देन दे हैव गिवन टाइमलाइन एज वेल। ठीक है, नाबार्ड ने आपके लिए सब कुछ बहुत ईजी कर रखा है। सो यू कैन सी द टाइमलाइन कि वेदर यू आर born not earlier than this or not after than this. So again, if you are in between the timeline, you are eligible for this exam. ठीक है, accordingly you can decide. Now next is about the relaxation. ठीक है, relaxation कितना दिया जाता है for the category students? So SC ST के लिए relaxation है 5 year, OBC के लिए it is 3 years and PWBD के लिए it is 10 year. Okay, you can see here age relaxation is there for PWBD aspirants even for the unreserved category. ठीक है, चलो Now there are few FAQs that I was talking about कि कुछ additional questions होते हैं बच्चों के. So let's see them one by one. So सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे नहीं है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे भी होता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे। ठीक है, so there is no limit on नंबर ऑफ अटेम्प्ट। ठीक है, आप कितने बार भी इस एग्जाम को दे सकते हो, ऐसा नहीं कि 4 बार 5 बार, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। यू कैन गिव मल्टीपल टाइम दिस एग्जाम। देन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है, दैट इफ यू हैव योर डिग्री इन योर हैंड बिफोर द डेट दैट इज डिफाइंड बाय द नाबार्ड इन द नोटिफिकेशन, देन यू आर एलिजिबल। इफ यू डू नॉट हैव, देन यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन कंसिडर होगी या नहीं? सो यस, डिस्टेंस एजुकेशन इज कंसिडर्ड वैलिड। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने डिस्टेंस एजुकेशन की है तो उसको नाबार्ड वैलिड नहीं मानेगा, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड वैलिड। पोस्ट ग्रेजुएशन नेसेसरी है? नो, पोस्ट ग्रेजुएशन इज नॉट नेसेसरी। आपने बैचलर्स डिग्री की है किसी भी सब्जेक्ट में एंड यू आर मीटिंग द मिनिमम एग्रीगेट रिक्वायरमेंट की 60% चाहिए, यू आर एलिजिबल, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन जो मार्क्स की हम बात कर रहे हैं 60% एग्रीगेट, वो हर सेमेस्टर में होने चाहिए या एग्रीगेट फाइनल होना चाहिए? सो आंसर विल बी कि फाइनल एग्रीगेट, जो आपकी फाइनल डिग्री या फाइनल मार्कशीट बनेगी उस पे मिनिमम 60% एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। एक्सपीरियंस में भी बहुत सारी क्वेरी आती है। सो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए फॉर फिलिंग दिस फॉर्म। ठीक है, इफ यू आर in your college, if you are fresher, you have just passed your bachelor degree, you are completely eligible. अगर experience चाहिए होता है तो they would have mentioned in the notification, right? So no experience is required, just with the bachelor degree, you are freshers, you can easily apply for this exam. ठीक है, so these are the few FAQs that I felt that I get often asked. So I have answered all these FAQs, and if you have still any doubt, you can just comment in the comment section. I'll surely reply to your question. ठीक है, so that's all. If you have enjoyed, just do let me know, and if you're new to our channel, please subscribe to our YouTube channel, and if you wanted to download the PDF regarding NABARD and NABARD examination, you can join us on our Telegram channel. So that was all students. I hope you have enjoyed, and still if you have any query that is left or that is not discussed here, you can always write in the comment section. I'll try to answer you there. Okay, so that's all. Thank you so much.